Hello students, the question is, given a thin convex lens of glass, refractive index mu, and each side having radius of curvature r, one side is polished for complete reflection, at what distance from the lens an object be placed on the optic axis so that the image gets formed on the object itself? And the given options are option 1 r upon mu, option 2 r upon 2 mu minus 3, option 3 mu r, and option 4 r upon 2 mu minus 1. So the problem is based on the topic ray optics. Now in this problem, there is a lens, a thin convex lens, and one side of this lens is coated, so that this is acting as a mirror here. The We have to find out the position of the object so that the image gets formed on the object itself. As I have said that this particular lens having one side coating, it acts as a mirror basically. So for the mirror, we know that the image gets formed on the object itself when the object is at the position of center of curvature. So the placement of the object should be at the center of curvature with respect to this assembly. So we have to find out first of all the radius of curvature of this equivalent combination of lens and mirror. And we know that the radius of curvature is related to the focal length by this formula 2 times f equivalent. So r equivalent equals to 2 f equivalent. So in this way we have to find out first of all 2 f equivalent and then multiply it by 2 so that we get the distance of the object from the mirror. Now, one more important concept here is this, that this equivalent combination of lens and mirror having a certain power is the addition of the power of the lens as well as the mirror. So, it is 2 times power of lens plus the power of mirror. Now, the power of the equivalent combination can be written as minus 1 upon f equivalent. The reason of the negative sign is this, because for the mirror we have to take the negative sign. We have to take the negative sign for the focal length here. So, minus 1 upon FL and 2 times of the PL, 2 times PL, and PL is 1 upon FL, 1 upon focal length of the lens. And then the next term here is 1 upon FM, because power of the mirror is 1 upon focal length of the mirror. Now, putting the respective values here, or we can change the, we can multiply minus 1 on both sides and we get this as 1 upon f equivalent is equal to minus 2 upon FL, 2 upon FL, then minus 1 upon FM. Here important point is also that this is a negative sign here. There should be a negative sign here, because for the mirror we have to take a negative sign. So that is why here is a positive sign. This is a positive sign. Now, focal length of the lens is calculated by 1 upon FL is given by mu minus 1, 1 upon R1 minus 1 upon R2 for the lens we know. And in this problem it is given that the radius of curvature of the both sides is R. So, using the sign convention, so 1 upon R minus 1 upon R, or we can say that mu minus 1 2 upon R, this is 1 upon FL. Now, we can put this value in this expression here. So, minus 2 multiplied by 2 upon R multiplied by mu minus 1, and 1 upon Fm, in place of 1 upon Fm we can put here minus 2 upon R. So, this is minus 2 upon R. Now, solving it further, we get this as minus 2 upon R as common here. So, we get inside the bracket 1 plus 2 times mu minus 1. Taking minus 2 upon R as common, we get 2 times mu minus 1, then plus 1. Now, this is 1 upon f equivalent, or we can say that f equivalent is equal to the reciprocal of this. It means that r upon minus 2 times 1 plus 2 times mu minus 1. Now, solving it further, we get this result as, and multiplying to both side also. So, that in the left hand side we get
the R equivalent value. So R equivalent comes out to be 2 times R upon minus 2 bracket 1 plus 2 times bracket mu minus 1. Now this 2 cancels with this 2 and we get minus R upon this becomes 2 mu minus 1. So this is the result, and we have to find out the distance basically. So there is no use of this negative sign because we are not concerned with the direction here, we are concerned only with the distance. So taking the absolute value of this, we get R equivalent equals to R upon 2 mu minus 1. So we can see that option 4 is correct here. यहाँ पे एक प्रॉब्लम पूछी गई है, इसमें कहा गया है कि एक थिन कॉन्वेक्स लेंस है ग्लास का जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, दोनों ही साइड्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दिया गया है, एक साइड को पॉलिश कर दिया गया है कंप्लीट रिफ्लेक्शन के लिए। इस लेंस से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए ताकि ऑप्टिकल एक्सिस पर रखा जाए ताकि इमेज जो बन रही है वो ऑब्जेक्ट पे ही बने, और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें आर और म्यू के टर्म्स में। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये लेंस की अगर एक साइड कोट कर दी जाए तो ये कॉम्बिनेशन एक मिरर की तरह एक्ट करता है, और मिरर के लिए हम जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट पे ही बनती है। तो एक तरह से हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, क्योंकि सेंटर से लेके उस मिरर तक की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हमें फोकल लेंथ निकालनी होगी इस असेंबली की। इस जो ये पूरा कॉम्बिनेशन मिरर की तरह एक्ट कर रहा है उसकी टोटल फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, और फोकल लेंथ रिलेटेड है पावर से। तो हम कह सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन की जो पावर होगी, इक्विवेलेंट पावर होगी, वो होगी पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, क्योंकि यहाँ पे रे लेंस से पास हो रही है और मिरर पे एक तरह से स्ट्राइक हो रही है, पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक हो रही है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि रे जो है एक बार लेंस में जो है लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हुए अंदर जाती है, फिर उसके बाद इस मिरर से टकरा के वापस जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करके फिर एयर मीडियम में बाहर आती है। तो इस तरह से यहाँ पे लेंस जो है वो 2 बार एक्ट कर रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस लेना होगा, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर उसके बाद मिरर के लिए हम यहाँ पे फोकल लेंथ को नेगेटिव पुट करेंगे, सो दैट्स वाई -1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट रखेंगे। इसी तरह से मिरर के लिए भी जो हम पावर ले रहे हैं उसमें जब हम उसे फोकल लेंथ के टर्म्स में लिखेंगे तो -1 अपॉन एफ एम लिखेंगे। पावर ऑफ लेंस बराबर होगी 1 अपॉन एफ एल, और एफ एल को हम अलग से कैलकुलेट करेंगे लेंस फॉर्मूले की हेल्प से। 1 अपॉन एफ एल इक्वल्स टू, इसमें फॉर्मूले में म्यू एल अपॉन म्यू एम होता है, मीडियम हम यहाँ एयर मान के चल रहे हैं तो इसलिए म्यू अपॉन 1 यानी कि म्यू, और -1 ब्रैकेट 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। दोनों ही साइड्स की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आर है। प्रॉपर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली आर वन को हमने आर कहा और आर टू को हमने माइनस आर लिखा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर यानी 2 अपॉन आर। तो 1 अपॉन एफ एल की वैल्यू आई म्यू -1 इंटू 2 अपॉन आर। इस वैल्यू को हम अपने एक्सप्रेशन में पुट करेंगे यहाँ पे 2 अपॉन एफ एल, तो यानी 2 इंटू 1 अपॉन एफ एल, और एफ एल 1 अपॉन एफ एल की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा -2 इंटू 2 अपॉन आर म्यू -1, और 1 अपॉन एफ एम की जगह हम पुट करेंगे -2 अपॉन आर। इस तरह से फिर हम जो है जो कॉमन क्वांटिटीज़ हैं -2 अपॉन आर को हम कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने के बाद हम जो है ब्रैकेट में हमारा जाएगा 1 प्लस 2 म्यू -1। ये वैल्यू है 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट की, यानी कि एफ इक्विवेलेंट अगर इसका रेसिप्रोकल दोनों साइड का हम ले लें तो हो जाएगा 2 एफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर अपॉन -2 ब्रैकेट 1 प्लस 2 टाइम्स म्यू -1। दोनों साइड हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हम 2 एफ इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं, हम बेसिकली हम आर इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं जो बराबर 2 एफ इक्विवेलेंट के है, तो इसलिए हम दोनों साइड्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट हैंड साइड में 2 से 2 कैंसिल आउट किया हमने, सिंप्लीफाई किया एक्सप्रेशन को, तो एक्सप्रेशन आता है -r अपॉन ब्रैकेट 2 म्यू -1। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट आता है, r अपॉन 2 म्यू -1। सो दिस इज द करेक्ट रिजल्ट। होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन।